So guys, let's start. I'm sharing my screen with you guys. Now tell me which chapter you want me to, you know, uh, clear in terms of doubts, in terms of concept. Anything you think you can ask me. So this is okay, tell now. So let me share my this thing. So I have shared my screen as well. उन्होंने सर्कल किया, प्रोबेबिलिटी किया, क्वाड्रेटिक सभी तो टॉपिक दो दो बार किया है, if you remember. Excuse me, sir. Yes, tell me. Sir, most probably just for a revision, I want to do prove that question of trigonometry. Okay, prove that question of trigonometry is really wonderful question thrown to me by Sunera. So you can see. Let me take my own question. No doubt, I have so number of. Yes, sir. Sure, sir. So, for example, I would rather take a good questions which will help you solve the queries. For example, this question, if it appears in your board exam, it will be a very difficult task. Trust me. So, how to achieve such questions? Have we solved this question? Do you remember 108 वाला किए थे क्या? मुझे याद. No, sir. No, sir. So let's understand this. So see, now you should understand CBSE versus state has become what you know. CBSE versus state has become CBSE is similar to state because as per the new instruction, all state board will be following CBSE pattern. Am I right? Are you aware of this? Yes, sir. And this will be happening very soon. तो तुम लोग बहुत जल्दी सीबीएसई का पढ़ने ही वाले हो और सीबीएसई के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो स्टेट में अपीयर होते हैं इंटरेस्ट में स्टेट के कुछ क्वेश्चन सीबीएसई सो अपना जो है if you see this is what is LHS given in front of you. So if I want to solve this LHS, don't see the solution, I will do it on my own. So I see one thing, there is a rishta between cosec theta and cot theta. And what is that rishta? Cosec square theta equal to 1 plus. Do you remember this? Yes, sir. Yes, sir. So cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So what is a square minus b square? This is behaving as if this is a square minus b square. So this is cosec theta plus cot theta, then cosec theta. सोचो एक जन बच्चे के क्वेश्चन पूछने से कितने बच्चों का फायदा हो जाता है? इक्वल टू व्हाट? This is 1. Am I right? Yes, sir. I wonder Yes, why these people have done so many steps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then proof. Now this is not a step. This is just a knowledge. So now I am writing the first step as LHS equal to, and this was the question. So my step starts here. So can't I replace this 1 by, guess what? I rather write cot theta, cosec theta in one bracket. And in case of this encircled 1, as you can see, this is encircled 1. This is that 1. Can't I put, my dear students, what can I put? Cosec theta plus cot theta. What else, guys? Cosec theta minus cot. Agreed? और नीचे वाले को छुएंगे भी नहीं. Cot theta minus cosec theta plus. क्यों नहीं छुएंगे? तुम बोलोगे सर नीचे को भी वैसे करो. अरे भैया दोनों देखो, मेरा नीचे 1 को भी वही रखेंगे तो वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. नीचे वाला ऊपर वाला बड़ा बड़ा है तो उसको छोटा करने के लिए मैंने ये रखा. अब देखो दोनों साइड एक चीज देखो, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर. ये वाला चीज और ये वाला चीज माइनस के इधर उधर कॉमन है, हमें राइट और रॉन्ग. गेटिंग माय पॉइंट? सही है? अरे
ये वाला ब्रैकेट रेड वाला देखो, और माइनस के इस पार में ये वाला ब्रैकेट, दोनों कॉमन निकलेगा ना? Yes, sir. So Yes, what is sir. common? Common indirectly is cot theta plus, Opposite. the moment this right is gone, what is left is 1. And the moment this right is gone, what is left is this term, that is minus cosec theta minus cot theta. Agreed or not? Whole upon. Whole upon what, class? Cot theta minus cosec theta. है ना? Cot theta minus cosec theta plus, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Next step we have answered. माइनस इसको चिपकेगा और इसको माइनस क्या कर देगा बाहर अंदर जाके, प्लस. So can't you see? This is plus cot theta. This is plus cot theta. This is minus cosec theta. This is minus cosec theta. This is plus one plus one. That means this entire bracket is same as below bracket. Am I right? So can't we cancel out this entire bracket? I'm sorry for this. Can't I cancel this entire bracket? And we are left with what? Answer. Cot theta plus cosec theta. But what is one cot theta? 1 by cos theta. I'm sorry. Extremely sorry. What is the what went wrong? Cot theta is the thing word. Cos theta by, and what is cosec theta? Hence, we got this proof. Isn't that true? This is finally 1 plus cos theta upon sin theta. Therefore, we conclude that LHS will be equal to what? LHS is equal to what? RHS. LHS is equal to what? RHS. कैसा लगा प्रूफ? मजा आया? कितने स्टेप? One step. Yes, sir. Please take a note of this. ये क्वेश्चन आने के बहुत chances है. This is how the topic goes today. This is one of the most likely PYQ, either of CBSE or state board. So I am going to do a big thing for the entire students of Maharashtra. करीब करीब 5 लाख बच्चे होंगे. 5 लाख या 10 लाख, मैं भूल गया कितने कितने बच्चे बैठते हैं 10th में यार. I forgot. Maybe 5 लाख सुना था, क्या सुना था पता है. तो सारे बच्चों के लिए मैं अभी एक स्पेशल लेक्चर लेने वाला हूँ जिसमें सिर्फ पीवाईक्यू से डिस्कस होंगे और वो ऑनलाइन पब्लिक सेशन होगा. बट तुम लोग के लिए वो सारे पत्ते खोलूंगा जो एक्चुअल में आने वाले. उसमें क्वेश्चन आया डिस्कस होगा तुम्हारे से वो क्वेश्चन जो आने वाले. Excuse me, sir. वैसे भी क्यों नहीं आई? हाँ बोलो सुमेरा. Can you please tell the weightage of this question? If it comes, I believe it has to be either 3 marks और मैक्सिमम मार्क्स तुमको कितना होता है याद है? कितना होता है मैक्सिमम मार्क्स क्वेश्चन? 4 or 3. So this is, I believe this, if this is coming in the question paper, it has to be 4 marks. और अगर उनको लगता है कि नहीं कम स्टेप में करो जैसे मैंने किया, ये 4 मार्क के हिसाब से देखो नीचे किया है ना. But this will eat up your head. So नहीं. अब इसके बाद ये लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आए. देखो जरा साउंड की क्लैरिटी क्या है. डन बेटा, ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Sir, just 1 minute. ओके, fair enough.
Done, sir. Oh, great. Now, next question. Let me come down to the next question. So, there are some different kind of PYQs as well. है ना? तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. Suppose this question comes in your exam. It will take you for a ride. This is also not exactly proof that. तुमको proof that का और एक क्वेश्चन दूं कि पहले ये क्वेश्चन ले लूं? बताओ. ये अभी जो मैं ले रहा हूँ टू फाइंड वन. आप Sir, जैसा. one more prove that question. चलो ठीक है. नहीं, प्रूफ दैट के क्वेश्चंस और लेना जरूरी भी है, सही वो भी. सो प्रूफ दैट. यस. Now such question if it comes 163, then you did not worry. This is just for, you won't believe, this is maybe maximum 3 marks. How to do this question? If you observe carefully, this is one equation given and this is another equation given. And I need to prove what? This answer. So as this, I'm sorry for this, what happened, I even, as this entire thing is around, revolves around squaring. So what is m square plus n square? Now see the beauty, how beautifully we can do this. This is a cos theta, b sin theta, and a whole square. This is how m square will come into picture. Now what is n square? You can easily see what is n square, guys. एक मिनट. इसको ना फुल ऑन कर देते हो. फुल ऑन मतलब ऐसे ताकि मेरे को स्पेस मिले. हाँ. What is n square, guys? A sin theta minus b cos theta का. Now what I'm going to do, if I see this is nothing but a square cos square theta. This is what class? B B square square. plus 2. Try to understand. AB cos theta into what? Sin theta. This entire part is done. Now the next term is of this wala, red wala. So this is again a square sin square theta. Come on. B square. But this time this is minus 2a sin theta. Now when I see this, you can clearly see this gets nullified. And what is common out here? A square, A square. What is left inside the bracket is cos square theta, sin square. What is common out here? B square, B square. What is left inside the bracket is sin square theta. What is cos square theta plus sin square theta? This entire thing is what? Common. 1. So therefore, this is equal to A square plus B square. and LH is equal to RHS. So such a question may appear like it has appeared in some of the both term, but it might appear perhaps मुझे ऐसा लगता है ये maybe 2 marks or 3 marks, but still it is important from the point of view of exam. That's why I took. Please take note of this. शायद बताओ ऐसा वाला क्वेश्चन किया क्या कभी? No, No, sir. sir. We have not done. So this is really a wonderful PYQ then. Not PYQ, sorry, MLQ. I should not write PYQ. Although it has appeared in CBSE, in your context, it has to be most likely question. Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, can we take a question of algebra after this? Yes, we can take. कौन से टॉपिक का बताओ? कोई भी टॉपिक बोल सकती है. The linear equation. Okay, linear equation.
तुम लोग अभी रात दिन पढ़ाई करते रहते हो क्या? बिकॉज स्कूल तो होता नहीं होगा, राइट? Yes, sir. स्कूल Yes, नहीं sir. होता तो दिन रात पढ़ाई, राइट ना? गुड इवनिंग सर। बुरी नहीं अभय, कैसे लेट हो गए बेटा? अरे सर कहीं गया हुआ था मम्मी के काम से। ओके, कैसी है मम्मी की तबीयत? अभी ठीक है पहले से। चलो यार, तुमने मेरे को इस बार आगरा का पेठा नहीं खिलाया। अरे अब क्या करें यार, चलो नेक्स्ट टाइम आओगे ना, नेक्स्ट टाइम बचन में आओगे तब खिलाएंगे। चलो बढ़िया बढ़िया। या तो आगरा आज शब आप बहुत आओ ना, शब आप आगरा हो सबको लेके तब हम खिलाएंगे। तुम्हारा डांस का वीडियो भेजना मुझे। डैडी डैडी ने बनाया है, डैडी को बोल दूंगा। हाँ मुझे भेजना है आपसे, ये सारे जो तुम्हारे फ्रेंड्स इस ग्रुप में सब देखेंगे तुम कितना अच्छा डांस कर। गाइस अरे लेट हाँ। मी टेल यू, all the Tejashwi, Sumera, Alana, one of our colleague, Mr. Abhay, is a very good dancer. He has danced a very good number in what we say Pushpa. All of you are aware of Pushpa? पुष्पा राज। Hmm. Yes, sir. और मैं भी डांस करूंगा, चिंता मत करो, जब ये अभय 80% लाएगा बोर्ड। आई विल Sure, डांस, sir. है ना? तुम लोग हंसना नहीं, लेकिन मैं डांस कर लूंगा अभय के लिए तुम लोग। Yes, sir. देखो कैसे हंस रहे हैं ना, तुम Yes, सोचे sir. अगला डांस भी करेगा। ए वैष्णवी को बुला लो ना यार, वैष्णवी क्यों नहीं आ रही? सर हम्म, वो मिस्टर। सो मिस, किसने बोला था, सुमेरा ने कि तेजस्वी ने कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, किसने बोला था? Sir, मैं तेजश्री। तेजस्वी। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ये रहा आपके सामने, अब कौन सा चीज पूछना बताओ। सर लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे याद नहीं है, पर एक क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन। अच्छा, इफ यू कुड सेंड मी इन दी व्हाट्सएप, आई विल पुट इट ऑन माई स्क्रीन एंड आई विल सॉल्व इट लाइव। सर कैन आई स्पेल इट? So you have to spell. Okay, fair enough. So I hope this everything, the spelling part goes right, because it is like अगर spelling में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो प्रॉब्लम होगा। चलो let's understand now. Yes, tell me. If alpha and beta are the roots of quadratic equation. Just a minute. Are the Yes. roots of, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा Q. Yes. 2x square plus 6x Square plus 6x. minus 5 is equals to 0. Right. Then find Then find. alpha plus beta Then find alpha plus beta. and alpha into beta. Okay, my dear students, this is the question thrown to me by Tejashri, right? Yes, sir. तेजस्वी एक ऐसी लड़की है जिसके तेज से पूरा जग चमकने वाला है। So let's understand how. So it's a very simple question, my dear student, because I have taught you sum of root and product of root. So if I see the comparison, Abhay beta आप भी ध्यान दो, in this 2x square plus 6x minus 5 equal to 0, we understand two things. This is A, this is B, and this is C. So this is A, this is B, and this is C. Minus 5 is. So what is sum of root? Very simple. Minus B by A. So that is minus 6 by 2, which is nothing but minus 2. What is product of root? C by A. What is C by A? Minus 5 by 2. So answer is minus 5 by 2. Isn't that very simple, beta? Is this done? All of you? Yes. So this is how we found alpha beta with the help of this equation. Simple. चलो और पूछो,
कोई भी कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से और किसी को कुछ पूछना है? बाय द वे क्वाड्रेटिक का था। बहुत सारे टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, प्रोबेबिलिटी है, सर्कल है, एपीजीपी है। Excuse me, sir. यस, Sir, lesson number 1, practice at 1.5, sixth one. लेसन नंबर 1। Yes, sir. अच्छा, algebra geometry. Algebra, sir. So what is the name of the lesson number 1, dear? Linear equations in two variable. Oh, linear equation in two variables. वाओ, देखो तुमने बोला और नाम हाजिर। ये पूछने वाली कौन? Vaishnavi. वैष्णवी। देखो साक्षात देवी जी ने हमको पूछा है, तो अब इसमें से कौन सा वाला क्वेश्चन? एक्सरसाइज 1.5. so let me scroll down 1.5 1.5 I think it has to be very नीचे वाला चीज। so 1.5 uh, 1.5 प्रॉब्लम सेट के पहले ना? यस गॉट इट। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर बताओ। Sixth one. Question number 6. ओके, so this is star mark question. So let's understand this. First I will draw the diagram. So here we go. So ये 9 क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। So what do you understand? Out of 1900 kilometers, so there is a total kilometer from point A to point B. कितना किलोमीटर बच्चा बताओ? 1900 किलोमीटर। कितना बोलो? 1900 किलोमीटर। विशाल ने ट्रैवल किया कुछ डिस्टेंस बाई बस और कुछ बाई एरोप्लेन। तो मान के चलो ए से लेकर बी पॉइंट के बीच में उसने ट्रैवल किया है विशाल नाम का प्राणी ने, है ना? तो ए से लेकर सी तक उसने किससे गया? बस। तो यहाँ पे लिख जाते हैं बस। और यहाँ पे किससे ट्रैवल किया? एरोप्लेन। तो बस ट्रेवल्स विद द एवरेज स्पीड। एवरेज को इग्नोर मारो, स्पीड पकड़ो। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस? एस बी 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर शॉर्टकट लिख रहा हूँ पर आवर। एंड एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, दैट इज एरोप्लेन is 700 kilometer per hour. It takes 5 hours to complete the journey. So what is the total time? This is the total distance, right? What is the total time, my dear students? The total time to complete this 1900 journey is how much is class? 5 hours. Am I right? So find the distance we shall travel by this. So don't you think TT मतलब total time. इसलिए time taken by bus plus time taken by this class aeroplane. Agreed or not? हाँ या ना तो Yes. बोलो। And I know speed is equal to what? Distance upon time. And the total distance, as we all know, is given to be. Remember, this is total time and this is total distance. So time will be equal to, what is the value of time then?
it will be equal to distance upon speed. So this will be distance, because distance traveled by bus and distance upon speed. So what is the distance traveled by bus? अब यहाँ पे है एक लोचा, मुझे नहीं पता डिस्टेंस ट्रेवल बाई बस कितना, तो मैं इसको क्या ले लूंगा क्लास x, मतलब AC कितना हो जाएगा x, तो ये कितना हो जाएगा 1900 माइनस इस क्लास 1900 माइनस x, एग्रीड। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई b अपॉन स्पीड ऑफ b plus distance traveled by A upon speed of A. What is the total time taken from the given thing? Yes, class. 5 hours. What is distance traveled by B? X. What is the speed of B? 60. What is this? 1900 minus X upon 700 equal to 5. So X निकल जाएगा, yes or no? So thus we can find what? X. So how to get X finally? By solving this question. Agreed? खास करके वैष्णवी, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So how to solve this question now? चलो, I will get it for you. Now the point is solving this question will require some LCM wala part. So what I will be doing is, why can't I multiply this entire thing by I believe it has to be 420 or 4200, क्यों 4200, या फिर देखो मैं देखता हूँ 6 7 से क्या होता है 42 और 0 0 कटने के लिए 2 0 कटने के लिए 100. So if I multiply this entire equation by 4200, what is the reason I told you LCM by 2 multiply whole by, so this is 4200 multiplied by 5 x by 62 into 4200 plus 1900 minus x upon 700 into 4200. Agreed all of you? So finally, this is 0, 0, 5 to the 10, carry 1, 5 4 the 20, 21,000. This is 0, 0 cancel, 6 70s are. So this has to be how much beta? 70x. यहाँ पे 0, 0 cancel, 7 6 are. So 6 9s are 54, carry 5, 1 1 4, 0 0 minus 6x. Agreed? So now this will finally eat up as to 21,000 minus 11400, है ना, equal to 70 minus 6x has to be how much beta? 64x. Am I right? So 2100 minus 11400 is 0069600. Right? So this is 9600 equal to 64x. तो देखते हैं ये जाता है कि नहीं, किसके टेबल में जाता है. सो 4 के टेबल में ये जाता है क्या? 4 2 8, 4 4 16, 0 0, 4 1 4, yes class, 4 6 20. अब 16 के टेबल में जाता है ये, चलो 4 से करते हैं. 4 कितने जा 600 से, और फाइनली 4 कितने जा 150. देखो तो पीछे 150 आंसर है क्या? Because this is distance traveled by bus, as I mentioned. देखो तो ऐसा ही है क्या बेटा? पीछे
Is this resolved? Caught पे? Yes. Is the answer correct? Important is I have solved it on the spot. Is the answer correct? 150. Yes, I'm asking all of you. खास करके वैष्णवी आपने पूछा देखो तो चेक करके. Yes, sir. Thank you. So that speaks volume Yes, कि sir. हम लोग. Thank you. इससे हमको पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन कितने काम के हैं ना जिसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से ही पूछ रहा हो और मैं आंसर दे रहा हूँ. हाँ अभय बोलो. हाथ उठाओ. अभय यू आर म्यूटेड. इसको पूरा लिख लो. ये क्वेश्चन सबको आता था जो वैष्णवी ने पूछा कि नहीं आता था? थोड़ा थोड़ा आता था. Not completely. हाँ बट अभी कंप्लीटली आ गया ना सिस्टमेटिक अगर बताया तो. Yes, sir. ये 9600 किससे खाता है आपने? 9600 किससे काटा? पेन हाँ से यही काटा बेटा. समझ. पेन से काटा. अच्छा 10 से काटते गए हो आप. हाँ अरे पगले. पेन से नहीं काटा. तुम भी इसको सीरियसली ले रहे हो. 9600 8264 बेटा. अभय आप जिस स्कूल में पढ़ते हो ना उस स्कूल के हम क्या थे पता है? क्या है? चपरासी. अरे वही बात है. देखो कटता कैसे है. इधर देखो. मेरे साथ साथ बोलो. 4 2 8. 4 2 4 8 4 4 4 16. 16 0. हाँ और ये 4 1 4 4 6 24. हाँ सही है. फिर 16 1 16 16 5 18 150. आ गए 150. खत्म करो बात. हाँ समझ गया समझ गया. अब है तुम बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? अरे सर कभी का कनेक्शन टूट जाता है मेरा. मेरे से कनेक्शन मत तोड़ देना बेटा. क्या? मेरे से कनेक्शन मत तोड़ देना. अच्छा नहीं तोड़ूंगा नहीं तोड़ूंगा. अभी कुछ दिन के लिए कनेक्शन टूट गया तो सारे तुम्हारे क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो अभी वापस मेरे को बोले सर जल्दी क्लास लो. तो देखो आज मैं तुम लोग के सामने आया. क्या क्या लेना? क्लास लो जल्दी. हाँ हाँ ये भी बात सही है. अब है सीबीएसई और स्टेट दोनों के लिए ऐसे क्लासेस अभी बहुत सारे होंगे एग्जाम तक. अच्छा एग्जाम तक चलेंगी ना? जिसमें मैं सारे मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस लेने वाला हूँ. अच्छा अच्छी बात है. तो गाइस वंस यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट तुम स्क्रीनशॉट ले लो. अब है देन प्लीज लेट मी नो मोर क्वेश्चंस. Sir, I too have one more question. यस मोस्ट वेलकम सुमेरा. व्हाई नॉट यू? सर मैं लिख ले रहा हूँ इसको. इसको लिखने में टाइम जाएगा बेटा. अभी ना अपन के पास टाइम कम. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो आज के लिए. इसको मैं लिख ले रहा हूँ. लिखो मत. सुनो ना. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. स्क्रीनशॉट लेना लेना आता है? लिख लिया है. वेरी गुड. यस सुमेरा बताओ. Sir, I have a question from financial planning. Should I spell or send it to in the group? एक मिनट. फाइनेंशियल प्लानिंग परहैप्स आई क्वाइट रिसेंटली आई टुक ना. जस्ट अ मिनट. लेट Yes, मी sir. रिमेंबर. Financial planning, international section. Oh, yes. Question number No, sir, it's from the horse question from the 21. I found out. 2021. No, sir, it's from 21. 21. That's a 21. Yes, Horse. sir. Yes, So sir. could you please send me the what we say screenshot in the WhatsApp? Yes, sir. Yes, sure, sir. Then I will upload it in my on my board and I will still wait for something. Yes, sir. Just a second.
Sir, I have sent it. Great. Just a minute, huh? Let me check out, and I will upload the same in my this thing. इसका फाइनल आंसर 135 है क्या? Yes, आइडिया है sir. आपको कुछ? Yes, हाँ? sir. Yes, sir. 135. Just a minute then. Sir, Let but that me- final answer rupees 135 is for CGST equals to SGST, not for the taxable value of printer. Hey, not an issue. Let me first upload the same. कहाँ गया क्वेश्चन? ये है क्वेश्चन. This is the question. Let me copy this image and financial untitled. So let me put here. क्वेश्चन क्यों नहीं आया? Shit. देखो वैसे मुझे कैसे करेंगे इसको? Just copy, download, save, open, copy and मेरा स्क्रीन ब्लैंक. अभी स्क्रीन में देखो तो क्वेश्चन लिख रहा है कि अरे बाप रे बेचारा, ये क्वेश्चन है राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर आ गया. हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो इसको थोड़ा बड़ा कर दे. चलो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. बाप रे 4 मार्क्स क्वेश्चन. मैं इस क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी थोड़ा सा चेक करने दो, है ना. लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स. ये ऐसा है ना, लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स sold the printer. एक सेकंड. लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स sold the center. अच्छा लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स एक बार क्रॉस वेरीफाई. सोल्ड प्रिंटर कॉस्टिंग 8260 with GST to a customer for 10,300 with GST. The rate of GST is 18%. Find the taxable value of the printer in each case, an amount of CGST and SGST to be paid by Lakshmi Electronics. So, can I do it stepwise, Yes, sir. all of you? Yes, sir. Yes, sir. Let's start. अबे तुम भी देख लो क्योंकि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो, है ना. करोड़ों में कमाओगे. तुम पुष्पा के पिताजी बनने वाले हो, है ना. अरे सर. चलो क्वेश्चन नंबर अरे यार ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया. क्वेश्चन नंबर अरे अभी छोटा हो गया. चलो कैसे करेंगे यार. क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे को लगता है आई हैव टू इंक्रीज द फॉन्ट. क्या? हाँ. क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन. तो सबसे पहले मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ भी हो, मेरा लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का उसने क्या बेचा का ये कंपनी नाम है. और उसने बेचा क्या? प्रिंटर. क्या बेचा? प्रिंटर. तो उसने जब बेचा तो उसका कोई दाम होगा. तो हम लोग लिखते हैं परचेज प्राइस. परचेज एकदम स्टेप वाइज जा रहा हूं. परचेज प्राइस. किसका परचेज प्राइस? प्रिंटर का, है ना. इक्वल टू कितना लेंगे? एक्स रुपीज. रुपीज एक्स. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. स्टेप 2 इसको बड़ा करना पड़ेगा. स्टेप 2 जीएसटी कितना लेगा वो? 18%. तो जीएसटी 18% अगर होगा कॉस्ट प्राइस का तो क्या हो जाएगा? एक्स इंटू 18/100. दैट इज 18x/100 is what? GST. Agreed?
Yes. सो थर्ड स्टेप क्या होगा? पीपी, दैट इज परचेज प्राइस। पीपी इसको अभी क्या पढ़ते हैं? पीपी विथ जीएसटी कितना हो जाएगा क्लास? एक्स रुपीज प्लस 18x बाई, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया पहला, मतलब दिस इज, इसको इतने सारे वर्ड, ये हो गया पहला स्टेप, परचेज प्राइस जीएसटी, परचेज प्राइस प्लस जीएसटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव बीन गिवन step 2, we have been given, what we have been given, the price of the printer with GST is 8260. Am I right? Yes, sir. So this entire thing is given to be 8260. And after taking LCM, what we get? Come on, beta, directly 118, 100 plus 80, 118x by 100. So can't we calculate the further thing? Yes, we can. कैसे? देखो, बताओ कैसे करेंगे? 100 to that side. देखो कैसे पता चलता, किससे काटेंगे? 7 8 56, 25, 7 1 7 प्लस 5, 12 का 2 कैरी 1 8 बराबर 70 से कट गया। तो बताओ x कितना आया? x आ गया 7000। एम आई राइट? Yes, sir. तो मुझे क्या पता चल गया? 7000। Purchase price with you. हाँ, वेरी गुड, परचेज प्राइस मुझे पता चल। और अब नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, सब मेरे साथ साथ समझ रहे हो ना? थर्ड स्टेप क्या करेंगे अभी? Yes, sir. कि द इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ा था। इनपुट टैक्स आईटीसी, आईटीसी इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट माइनस व्हाट, याद रखना, Put दैट tax इज tax. आउटपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स, आउटपुट प्राइस, नॉट आउटपुट टैक्स। कम ऑन, कैसे बात कर रहे हैं? आउटपुट प्राइस माइनस परचेस प्राइस। व्हाट इज आउटपुट प्राइस? फाइनल आउटपुट प्राइस गिवन वाला जो दिखाया था, ये वाला आउटपुट प्राइस था, जैसे 8260। सो 8260 माइनस 7,000. 7000। तो बताओ व्हाट इज द आंसर? कम ऑन, सबट्रैक्ट इट लाइक अ प्रो। 8,500 1260, maybe. नहीं 1260 ना, 7000 में से 8000 गया तो 1000 और 260। Yes, sir. I was confusing other Not question. an issue. Not an issue. Now, what find the taxable value of the printer in each case and amount is. Now, I am not sure about the selling price. So let us, ये तो purchase price किया था. Let us understand selling price को हम लोग क्या ले लेते हैं? Y. That is rupees Y. Agreed? तो इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा. इसका जीएसटी क्या हो जाएगा? 18Y. Same process. 18Y by 100. और सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, एसपी प्लस जीएसटी। जैसे यहाँ पे परचेस प्राइस प्लस जीएसटी था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। ये हो जाएगा सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस के हिसाब से क्या हो जाएगा? 118y बाई 100। एग्रीड? Yes, sir. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो 118y बाई 100 इज गिवन टू बी हाउ मच? यस, उसने इतना कॉस्टिंग था, रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट, इतना कॉस्टिंग था, बट उसने कस्टमर को इतने में दिया, तो इसका मतलब बेचने वाला प्राइस यही हुआ ना, टोटल विद जीएसटी, विद जीएसटी। तो ये है वाला कॉस्ट, मतलब ये कितना है? 10030। 230. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. अब सवाल उठता है किससे कटेगा, किससे कटेगा? तो आप क्या करो, काटने के लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, है ना? कि तो किसी के इसमें आता नहीं, तो हम लोग क्या इसको डायरेक्टली पूछ रहा हूं आप लोग से। Sir, 85 जा.
कैसे इतने जल्दी कैसे पता चल गया 85? कुछ तो जुगाड़ मारा होगा ना। यस सर। एक काम करते हैं ना, सिंपल 118 को 10030 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 1 जार से तो बहुत छोटा हो जाएगा, और डायरेक्ट 9 जार करने से 1000 के ऊपर जाएगा, तो 8 जार, 8 जार 64 का 4 कैरी 6, 8 1 जा 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी 1, तो राइट दिस, so this is 9 5 and here it comes, है ना, 8 8 जा 64, हाँ सही है, तो 6 plus 3 9, then this is 5 and this is 5 9 0। ना नेचुरली आखिरी में 0 आया तो 5 से जाएगा, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4 9, देखो बराबर आया ना, यस और नो? यस सर। Yes, Is a sir. into. So what is the answer of the 8, y? This y 5000. is 8500. 8,005, 8,500. So now what we have to do? GST collected while selling. So now the fifth step, GST collected while selling. So what is the GST while collected while selling? Let's understand. ये भी मैंने बताया था आप लोग को कैसे करते हैं। इसको करने के लिए GST collected at while what selling is again the same style. Selling price, output selling price minus input selling price. So output selling price कितना था? 10, 10,000. कितना था देखो, 10,030, और इनपुट सेलिंग प्राइस क्या था ये, दोनों का 8,500. डिफरेंस कितना आता है? 1,500. 15,51530। Agreed? 1, yes, sir. Now what is the sixth step? Sixth step is GST payable. What is GST payable? कितना GST वो पे करने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। GST पेबल मैंने सिखाया था आप लोग को, Output tax, दैट इज output tax minus आउटपुट ITC. आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। आईटीसी तो अभी निकाला, कहाँ निकाला, देखो देखो ये है आईटीसी। 0. So 1260. and output tax is of course this is also known as, क्योंकि A, selling मतलब output, this is output tax OTT। So OTT minus those, that is 1530 minus 1260. So what is the answer, my dear student? It comes out to be 270. Am I right? Yes sir. excuse me, sir. 7. हाँ, Sir, it will so not be that 8260 from the ITC, that OP output. because 8260 is output, which is 8260 and the purchase price. But ITC is Yes, sir. subtraction of 2, which comes out to be, 1260. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. So 1260, try to understand. 1530 and 1260 will leave 270. Now the final calculation, what has been asked, calculate the amount of GST, CGST and SGST, as we can see. So CGST will be equal to SGST because both are, half of the GST payable, है ना, GST payable. So 270 का आधा, 270 का आधा कितना होता है? 135. 130। Hence, मजा आया? Yes, sir. Sir. तो कैसा, और डाउट है पूछ सकते हो, नहीं तो कल नहीं परसों लेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि सीबीएसई के भी बहुत सारे सेंसर्स हो रहे हैं, 12 के भी बहुत हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेट डेज का ही रखेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन लेंगे जैसे, और है कि नहीं तो आज माइंड अप करके बता, मुझे कोई दिक्कत नहीं और लेने। Sir. हाँ बोलो। Sir, can you please take a revision class for mensuration? Mensuration. So can we do it freshly in the next session, if you allow me? Yes sir. That will help all of us, including CBSE students. All of you agree with this? Yes, sir. Sure, sir. और अभी के लिए, आज के लिए इतना काफी है। Yes. Yes, sir. Okay, guys, I think
I should be winding up because it's almost, I think, 9 o'clock, perhaps. Yes, sir. So just come on screen once before we sign off. देखो, अभय के स्माइली से पता चल रहा है वो हंस रहा है। वैष्णवी के पास धड़कता हुआ दिल है। अलायना के पास चिट्ठी में दिल है। अर्चना के पास खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। सो अर्चना के पास कुछ नहीं है, हाथ में घड़ी चमका रही है। और सुमेरा एक ऐसी लड़की है जो जादू है, जो दिखती नहीं लेकिन है जरूर, है ना? सो गाइस, आई थिंक यू आर एंजॉयिंग माय सेशंस। Yes, sir. Yes, sir. याद रखना, Very much. what whatever decision you take in life, कंसल्ट मी वंस, फिर पछताने से मैं वापस कंसल्ट नहीं करना। फ्यूचर में तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ भी बनना है, लॉयर बनना है, आई है। यू सी माई प्रोफाइल, मैं बच्चों को सही डायरेक्शन देता हूँ ताकि वो सही चीज बने। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। Yes, sir. तुम्हारे रमेश, गणेश, सुरेश, शांता कांता, पुष्पा दोस्त ने कहीं एडमिशन लिया तो आप ले लोगे, ऐसी गलती मत करना। वैसे भी आजकल बहुत बड़े बड़े कोचिंग क्लास बंद पड़ जा रहे हैं। दे आर दे हैव डिफॉल्टेड सो मेनी स्टूडेंट्स इन द एंटायर इंडिया, है ना? सो प्लीज डोंट गो बाय ट्रेंड्स, गो बाय द suggestion of experienced person, and I am one of the most experienced person। देखो मेरे बाल चले गए एक्सपीरियंस लेके, है ना? सो गाइस, थैंक यू सो मच। और अभय का डांस का वीडियो प्लीज भेजना अभय। ऑल दी स्टूडेंट्स विल एंजॉय योर सर डांस वीडियो। हाँ सर आपसे कुछ पर्सनली बात करनी थी। हाँ, तो बाय गाइस, ये भी होता है अपने सेशन में, अगर तुम किसी को लगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। अभय वांट्स टू बी इन द पर्सनल जूम रूम। Yes, sir. Good. बाय Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। हेलो। एक सेकंड, पहले मुझे YouTube लाइव को एंड करने दो ताकि वहां से एंड हो जाए, हाँ ठीक है। ताकि तुम लाइव, यस, अब तुम बोल सकते हो। कब निकले सर आप?